unmute you. Thank you. So when we talk about permeability, forward, aft, all right. Now, when we talk about permeability, so permeability is basically the amount of space available for water to come in. Permeability is the amount of space or volume of space available for water to come in. Now, when yesterday I gave you an empty hold, that means there was no cargo. So permeability would be how much? 100%. Correct. Because it was empty. So the entire space was available for water to come in. So permeability was 100%. But if I say permeability is 30%, what does that mean? 70% cargo. That means 70% is occupied by cargo. That means 30% is the amount of space available for water to come in. So that is the meaning of permeability. Permeability is represented by P or mu, like this. It's represented, some books use P, some books use mu, right? I will always be using P since it's easier to remember. That's why. But you can use this also, there's nothing wrong with it. And it is a percentage. So basically, it is given by the formula permeability is a percentage. So broken stowage divided by stowage factor into 100. Broken stowage divided by stowage factor into 100. अब इनपरमिबिलिटी बेसिकली जब हम बात करते हैं तो कुछ assumptions लेते हैं. एक तो ये है कि permeability is always with dry cargo. It's never with wet cargo. It's never with liquid cargo. Right? It's always with dry cargo. अच्छा, सो हमारी assumption जो है, ये अब मैं बिल्जिंग की बातें कर रहा हूं, हमारी assumption ये है कि हमारा जो कार्गो है, assumption is cargo is in bags. सबसे पहले तो हमारे को समझने में आसानी होगी. कार्गो बैग्स में है, बल्क कार्गो ऑफ कोर्स, बल्क कार्गो इन बैग्स. ओके, अच्छा, तो अब ये बैग्स में है, तो ये मेरे बैग्स, ये रहे मेरे बैग्स जो कि भरे हुए हैं. अब इसमें हो जाता है होल, तो इसमें पानी भर जाएगा. तो क्वाइट ऑब्वियसली पानी, जितनी भी ब्रोकन स्टोरेज होगी जगह, दैट मीन्स इन बिटवीन बैग स्पेसेस जो भी होगी, उसमें पानी भरेगा. So now everywhere in the hold there is going to be water
and everywhere in the hold there is going to be bags because the bags will be sloshing around in the hold. So when I say permeability, supposing मैं कहता हूं इस जहाज की permeability 30% है, तो मैं ये कह रहा हूं कि 70% तो बैग कार्गो ने ऑक्यूपाई कर लिया और 30% इसमें पानी भर गया ब्रोकन स्टोरेज में, एंड उतना पानी मेरा आ गया. नाउ इंपॉर्टेंट थिंग, जब होल हुआ तो द वाटर कैन गो आउट टू सी बट द कार्गो कैन नॉट. That means what I'm trying to say is post bilging, the assumption is water is a part of the sea. Water is a part of the sea, but cargo is a part of the ship. ये समझ में आया मैंने क्या लिखा है? Yes, sir. Yes, sir. कि मैं ये कहना चाह रहा हूं कि इसमें पानी भरा, सब जगह होल्ड में बैग्स भी स्लॉश अराउंड कर रहे हैं और पानी भी है और बैग्स भी फ्लोट अराउंड कर रहे हैं, लेकिन जब पानी दरिया को जा सकता है और दरिया अंदर आ सकती है, लेकिन कार्गो जो है दैट इज अ पार्ट ऑफ द शिप ओनली, दैट इज नॉट अ पार्ट ऑफ द सी. तो ये हमारी assumption रहेगी जब हम ये कैलकुलेशंस करेंगे विद परमेबिलिटी. एंड देन ऑफ कोर्स मेरी लॉस्ट बॉयंसी हुई है तो गेन्ड बॉयंसी भी होनी चाहिए. सो देयरफॉर मैं दूसरी वाटर लाइन पे जाऊंगा, W1L1, एंड अंदर में पानी ऊपर तक जाएगा वहां तक एंड वाटर प्लेन तक, और यहां पे बैग्स भी फ्लोट अराउंड कर रहे होंगे और पानी भी फ्लोट अराउंड कर रहा होगा, एंड देयरफॉर ये मेरी गेन्ड बॉयंसी हो गई, which will be equal to the lost buoyancy, which is 30% of course, and my vessel will be float again, and it will be floating. Any doubt so far? Okay. So एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं कि हाउ टू हैंडल दिस परमेबिलिटी. अगर एग्जाम में आता है कभी तो इसको कैसे संभालोगे, बिकॉज ऐसा काफी पॉपुलर होगा. सो एक एग्जांपल करवा रहा हूं. So a compartment is full of coal. So coal is there, coal cargo in bulk. And iska coal ka storage factor is given to you as 1.3 cubes per ton. ठीक है. RD of the coal. RD of coal is 1.1. You have to find P, the permeability. So how do we handle such a question? So when I say RD of coal is 1.1, इसका मतलब है density of coal is 1.1 tons per meter cube. That is the density of coal. Now, that means 1.1 ton of coal occupies
1 cubic meter of space. That is the meaning of this sentence. Or 1 cubic meter of space weighs 1.1 tons of coal. Therefore, how much will 1 ton of coal occupy? 1 divided by 1.1 cubes of space. How much is this? 0.9. 0. Nine. Yeah, go to 3 decimal places. 0.09. 0.909. Yeah, go standard practice, MMD, 3 decimal places. So 0.909. That means 1 ton of coal मेरा occupy करेगा इतनी volume of space. But I know my coal is occupying 1.3 cubes of space, 1 ton of coal as per the storage factor. But 1 ton of coal is occupying 1.3 cubes of space as per SF. Therefore, broken storage will be equal to 1.3 cubes minus 0.909 cubes. This will be the broken storage. How much is this? 0.391. 0.391 cubes. So this is my broken storage. So now go to the formula. Permeability is equal to broken storage upon storage factor into 100. 30.077. 30.0. How much is it? 30.077. So this is the permeability. Any doubts in this? How we have done it? ये एग्जाम में काफी बार ऐसा चीजें आएंगी, अलग अलग वैल्यूज दी हुई होंगी एंड यू विल बी आस्क्ड, मतलब प्रॉब्लम कुछ और होगी. ये स्टार्टिंग पॉइंट है. प्रॉब्लम विल बी समथिंग एल्स. ठीक है, इज दिस ओके? Yes, sir. Okay, now okay, now supposing the length of the vessel is capital L, breadth of the vessel is capital B, draft is small d. The length of the hold which is getting bilged is small l. The breadth of the hold which is getting bilged is small b. Permeability is P. I have to calculate the new draft. So this is my mean sinkage, MS. Then mean sinkage is given by one formula, MS is equal to lost buoyancy over
intact water plane area. Lost buoyancy जो मैं लूज कर रहा हूं ये वाली over intact water plane area. Lost buoyancy is P, that is permeability, into small l into small b into small d, PLBD. This is my lost buoyancy. Over intact water plane area. Intact water plane area is water plane area initial minus water plane area lost. Lost to whom? Lost out to sea. Water plane area initial water plane area, WL वाला, capital L into capital B. Water plane area lost, ये वाला बीच वाला portion, PLB. Permeability, because bags are also floating around, which is a part of the ship. The water is a part of the sea. So P times small l small b is the water plane area lost. Minus कर दिया, we will get intact water plane area. And ये denominator में यहाँ चला गया. LB minus PLB. ये हमारा बन जाएगा फॉर्मूला फॉर मीन सिंकेज. इसके यूनिट्स ऑफ कोर्स मीटर क्यूब होंगे, इसके यूनिट्स मीटर स्क्वायर होंगे. कैंसल and you will have meter remaining. So mean sinkage will be in meters. Then the new mean draft will be equal to old draft plus mean sinkage. सर हाँ जी, हाँ जी. सर जो ये इंटैक्ट वाटर प्लेन एरिया है उसमें सर जो लॉस पॉइंट्सी है वो लॉस वाटर प्लेन एरिया उसमें हम लोग परमेबिलिटी से क्यों मल्टीप्लाई कर रहे हैं सर? इसलिए क्योंकि जब पानी भरेगा तो ये बैग्स भी इसके साथ फ्लोट करते हुए ऊपर आएंगे. तो यहाँ पे पानी भी है और बैग्स भी हैं. ओके Bags are a part of the ship. Pani is a part of the darya. Pani is a part of the sea. That's why. सर अगर बैग्स ना हुए फिर परमेबिलिटी नहीं ना आएगी. अगर बैग्स नहीं हो, अगर कोई भी ना हो, मतलब कोई कार्गो ही नहीं है, तो परमेबिलिटी इज 100%, विच इज 1. अगर कोई भी कार्गो नहीं है, देन परमेबिलिटी इज 100%. सर फिर सेम एज द केस ऑफ दैट लॉस्ट पॉइंट्स आल्सो ना, द परमेबिलिटी 1 हो जाएगा. देन परमेबिलिटी 1 हो जाएगा. सर अगर ये कोल फिल्ड कंपार्टमेंट है या फिर ग्रेन फिल्ड कंपार्टमेंट है तो अगर फुली फिल्ड है कंपार्टमेंट तो हम ये तो कभी कह ही नहीं सकते कि परमिलिटी वहां पे ना हो. तो ग्रेन और कोल में हमेशा रहेगी सर. तो देयरफॉर वो फॉर्मूले से आप कैलकुलेट करोगे, स्टोरेज फैक्टर आपको ग्रेन या कोल का मिलेगा. नहीं सर, मतलब डाउट ये था कि परमिलिटी आपने ये समझाया कि जो एम्प्टी स्पेस होती है कंपार्टमेंट, और अगर हम एक कंपार्टमेंट को कोल फिल्ड कर देते हैं या ग्रेन फिल्ड कर सकते हैं, परमिलिटी तो उसमें हमेशा रहेगी ना सर. बिल्कुल रहेगी. आप उसको ऊपर तक भर दो, उसमें स्टोरेज फैक्टर तो होता ही है. यस सर. तो स्टोरेज फैक्टर होता है तो इसका मतलब प्रोबेबिलिटी होगी होगी. ओके. एनी अदर डाउट? सर बट इसमें अजम्पशन यही रहेगा ना कि दे आर इन बैग्स ओनली. हाँ, बेसिकली वी आर assuming either your cargo is bulk or bags. It could be bulk also. You could have a bulk cargo also. You could have
a cargo of, but whatever be the case, the cargo will be floating around is the issue in the water or sloshing around, whatever you want to call it. Whatever be the cargo of whichever type, बेल्स होगा क्या है, मतलब जो भी चीज हो सकती है. Okay, so having understood this formula now, let us move to the cases. So various cases. अच्छा, before I move that, अब इस सारे जमघट में, ये वाले फॉर्मूले में, basically in the case of Titanic, that was the moot point. Why did Titanic sink, even though she was called as the unsinkable? So what happened in the case of Titanic was, when the iceberg hit the ship side, the water entered in. Now the water entered in and the buoyancy was lost. Now, what the architects had done there was, in order to save money, in order to save steel, so that she could have a faster speed, ये जो bulkheads थे, ये ऊपर तक नहीं जा रहे थे, ये partial थे. They were not going right up to the top. So as a result, the water entered in, filled up, and then went to the next compartment. The next compartment was also not a complete one. Then the water entered into the third one. So as a result, what you had was progressive bilging. And due to this, water entering the next compartment and the third compartment and the fourth compartment, the stresses of the vessel became so much that when she started bending, the rivets gave way and the rivets parted. उन दिनों welding होती नहीं थी. And the rivets parted, and then she broke into two pieces. And then she sank. So, post Titanic sinking, when SOLAS was revised, immediately SOLAS came in, post Titanic only. Titanic sank, I think, in 1919 or something, and 1920, SOLAS. 1912 से. 1912. So, 1920, post Titanic, the first SOLAS came. So, what they did in that was, they made the bulkheads right up to the top. That was the first thing they did. ये bulkheads ऊपर तक होने चाहिए. फिर एक दूसरी चीज उन्होंने करी, उन्होंने कहा कि सारी की सारी जड़ ये है, लॉस्ट बॉयंसी की प्रॉब्लम है. इसी तरीके से हमें ये लॉस्ट बॉयंसी को कंटेन करना है. कैसे करें? तो उन्होंने दे क्रिएटेड समथिंग कॉल्ड एज वाटरटाइट फ्लैट. वाटरटाइट फ्लैट क्या चीज है? वाटरटाइट फ्लैट is a horizontal deck head, is a horizontal deck like this, a partition. The deck head of a DB tank in our case is called as a watertight flat in bilging. So अगर हमारा DB tank 2 मीटर की हाइट का है और उसका जो ऊपर का डेक हेड है उसको हम watertight flat कहेंगे in bilging language. So this they introduced watertight flat. अब अगर bilging होगी and watertight flat will go to a height of h. So when bilging will occur, how much will be your lost buoyancy? PLBH. LBH. Correct. So your D will get replaced by H. So you will only lose up to H. That means आपने न्यूमरेटर को कम कर दिया बेसिकली. अगर आपने न्यूमरेटर को कम कर दिया तो आपने मीन सिंकेज को कम कर दिया.
So this was the two things which were done post Titanic so as to prevent the sinkings or to reduce the chances of sinking. सर एक बार रिपीट कर देंगे प्लीज ये एच मतलब ये वाटर फ्लैट का ये the deckhead of a DB tank is called as watertight flat. So it is given at a height h. So अगर बिल्जिंग होगी डीबी टैंक में सपोजिंग या वाटरटाइट फ्लैट के नीचे तो पानी कहां तक जाएगा? एच हाइट एच हाइट तक जाएगा. तो मेरी लॉस बॉयंसी क्या होगी? पी एल बी एच ये होगा. ओके So that is, so basically ये, so this was the introduction of what is called as a watertight flat. ये था. Okay. This brings me to my cases of bilging. All our problems will be hovering around these 7 cases. So abhi we are going to be doing 7 cases. For all the cases that we are doing, length of the vessel is 100 meters. Breadth of the vessel is 20 meters. Small L 10 meters. Small b 20 meters. Draft 5 meters. Permeability 25%. Case number 1. So ये standard parameters रहेंगे for all the cases that we keep doing. ये standard parameters होंगे. Case number 1. All right. So let us take case number 1. Forward, aft. ये रहा हमारा वाटर लाइन. ये रहा हमारा ड्राफ्ट 5 मीटर का. Permeability is 25%. So case number 1, H is far greater than D. मतलब watertight flat है लेकिन उसका होना ना होना एक बराबर है. ये रहा. This is my H. This is H. इतना ऊपर है कि वहां पे मेरा पानी पहुंचेगा ही नहीं. So is the case number 1 understood by everybody? Is case number 1 understood by everybody? Yes. Okay. Yes. तो इसमें बिल्जिंग हुई तो इसमें पानी भरा, लॉस बॉयंसी भी हो गई.
पानी बढ़ता गया और सिंकेज शुरू हुई एंड बाहर का पानी और अंदर का पानी इक्वल हो गया एंड water vessel is floating again at a new water line W1L1 and this is my mean sinkage MS और ये मेरी हो गई मेरी सर अगर इसमें एच का कोई एच तक पानी भरेगा ही नहीं तो फिर हम फॉर्मूले में क्या लेंगे, एच लेंगे डी लेंगे? अब आप बताओ, ये आप बताओगे मुझे। एच माइनस डी। सोचो, फिर से सोचो। अगर मैंने क्या बोला, एच हो या ना हो उसका कोई मतलब ही नहीं है, मतलब उसका होना या ना होना एक बराबर है। तो अगर सपोजिंग ये ना होता तो क्या लेते आप? डी। बस, तो फिर वही, दैट आंसर्स योर क्वेश्चन। एग्रीड? सो लॉस्ट buoyancy, PLBD 0.25 into 10 into 20 into 5 कितना आया? $250. Is this okay with everybody? Water pressure area initial is LB, capital L into capital B. Is equal to 2000 meters square. WPA lost, P small l small b, जो मैं लूज कर रहा हूं, 0.25 into 10 into 20 50. 50. Now can you find out MS for me, please? $0.128. And therefore 8.128. new mean draft will be 5.128. Is this okay with everybody? Any doubts? No, sir. This is case number 1.
So basically, why are we losing the waterplane area? We are losing the waterplane area because वो वाटर टाइट फ्लैट जिस काम के लिए बना था वो उसका होना या ना होना एक बराबर है, तो इसलिए मेरा वाटरप्रूफ एरिया लूज हो रहा है, इसलिए मेरी लॉस्ट बॉयंसी भी पूरी की पूरी लूज हो रही है, वो काम ही नहीं कर रहा. ओके, लेट्स कम टू केस नंबर 2. Case number 2. H is equal to 1 meter bilged above the watertight flat. H is 1 meter. Bilging has happened above the watertight flat. तो अब ये this is 1 meter. And bilging is happening above the watertight flat, यानी कि ऊपर में हो रहा है, बिल्जिंग नीचे नहीं हो रही. P is the same, 25%, no change. So can you tell me what will be my lost buoyancy now? .25 into 10 into 20 into 4. So PLB D minus H. Yeah, D minus H. Is this okay with everybody? Yes. Yes. All right. So PLB D, अब मेरी D minus H लूज हो रही है, नीचे तो पानी जाएगा नहीं obviously. So therefore 0.25 into 10 into 20 into 5 minus 1, that is 4. $200. How much? 200. 200 cubes. All right. Waterproof area initial is going to be same, that is 2000. Waterproof area lost will be same, PLB, which is going to be equal to 50, that is 0.25 into 10 into 20. So now you can tell me the mean sinkage. 0.103. 0.103. That is 200 divided by 1950. Is this okay with everybody? So is case number 2 all right with everybody? Yes, sir. Okay. So this was case number 2. We're coming on to case number 3.
Case number 3, H is 1 meter but bilged below the watertight flat. Bilged below. अब जो बिल्जिंग हो रही है वो वाटरटाइट फ्लैट है और वो अपना काम कर रहा है, जिस जिस काम के लिए वो बना है. इट वाज डिजाइंड फॉर दिस जॉब. It was designed for this job. So मेरी लॉस्ट बॉयंसी कितनी होगी? V1 होगा. One only. Only 1 meter. Only 1 meter. LBH आ जाएगा. Yes, Correct. Absolutely right. So calculate the lost buoyancy. LBH. $12.5. हाँ जी. 12.5. How 12.5? 50. It'll be 0.25 into 10 into 20 into 1. 50, sir. Yeah, right. Is this okay with everybody? Yes. So waterproof area initial will be 2000. How much will be the waterproof area lost? Waterproof area lost will be 0 in this case. Why 0? Because मेरा पानी अंदर का पानी आया और 1 मीटर की हाइट पे आके रुक गया. It has just stopped here. बाहर का पानी तो डूबता जा रहा है मेरा जहाज. So it's sinking. So in the final condition, inside level नीचे है, outside level ऊपर है. In the final condition. So my waterproof area lost will be 0. समझ नहीं आया. रिपीट करो. Okay. So इसका पहले एक golden rule लिख लो. Just make an asterisk and write down. Then I'll explain it. So this will be a standard rule for every question now. So mark it as an asterisk as a golden rule. Whenever in a question H is given, that means I'm saying watertight flat is given. Whenever in a question watertight flat is given or H is given such that and bilging happens. सर H is given उसके बाद क्या है? Whenever in a question H is given and bilging happens below it only. Below it only, such that
in the final condition, inside water level inside water level is lower than the outside water level. Then WPA lost. Then WPA lost will be 0. Then water plane area lost will be 0. एक्सक्यूज मी सर, सर इसका हाँ मतलब जी। अगर एच की हाइट एग्जैक्टली 5 मीटर भी होती तभी भी WPA 0 ही होता अगर हाँ, अब मैं उस ड्राफ्ट पे के आऊंगा, लेवल वो हमारा एक केस बनेगा अभी आगे जाके, वो एक केस है, that is a case, but you are right there, absolutely. So that will also become a case for us. But अभी what I am trying to say right now is कि पानी इसके अंदर भर गया, तो रेड वाला पानी जो है, जो दरिया का पानी है, इनसाइड लेवल वाला, वो 1 मीटर पे आके रुक गया. बाहर का पानी, ये ब्लू वाला, ये पानी ऊपर चला गया. फाइनल लेवल में आपने कंपेयर करना है इनसाइड लेवल कहां पे है और आउटसाइड लेवल कहां पे है. इनसाइड लेवल नीचे है, आउटसाइड लेवल ऊपर है. इसका मतलब क्या है? WPA लॉस्ट 0 होगा हमेशा. ये समझ में आया? मतलब ये दिस इज नॉट कंट्रीब्यूटिंग टू माय वाटर प्लेन एरिया बीइंग लॉस्ट. Why was my water plane area lost in case number 1 and 2? Because my inside level and outside level were merging. अंदर में पानी भर रहा था मेरा होल्ड में या टैंक में, और बाहर के पानी की लेवल तक जा रहा था, और बीच में शिप साइड थी. दोनों एक साथ इक्वल हो रहे थे. तो उस वक्त मेरा वाटर प्लेन एरिया लॉस्ट हो रहा था. जो वो एरिया था, जो टैंक वाला, होल्ड वाला, वो दैट वाज नॉट अ पार्ट ऑफ माय शिप, दैट वाज अ पार्ट ऑफ द सी. But here, this is a part of the ship. That is what I'm trying to say. This is a part of the ship. My ship's underwater shape now is this, and this. It's like a H or an inverted U, you can say. In my shape of the ship, in underwater shape, is an inverted U. This is a part of the ship. This is a part of the sea. Yes, sir. Is it okay? ये समझ में आ गया? यस सर. सर अगर मान लो हम बलास्ट कंडीशन में हैं एंड डीबी टैंक में होल होता है तो अभी रुक जाओ, अभी आगे मत भागो. आगे मैं करूंगा, वो सारे केसेस आएंगे. तो मैं उसमें पानी डालूंगा, तेल डालूंगा, सब करूंगा अभी. बट अभी रुक जाओ, जस्ट हैंग ऑन, डोंट गो आगे, बिकॉज हर एक चीज का एक कॉन्सेप्ट मुझे समझाना पड़ेगा. तो मुझे वो स्टेज वाइज करने दो. बट आई विल कम टू दैट केस, व्हाटएवर यू आर टेलिंग मी. ठीक है? इज दैट ओके? यस सर. So, having understood this zero concept, now you calculate the mean sinkage. 0.025. Correct. 2000 minus 0 is equal to 0.025. Notice sinkage कितनी कम हो गई है. क्यों कम हुई है? Two things. Thanks to the watertight flat. एक तो न्यूमरेटर कम हो गया, और दूसरा डिनोमिनेटर बढ़ गया, क्योंकि WPA लॉस्ट कम हो गया, तो डिनोमिनेटर बढ़ गया. ये घट गया, ये बढ़ गया है, तो नेचुरली सिंकेज कम हो जाएगी. एंड देयरफॉर आपका न्यू मीन ड्राफ्ट विल आल्सो बी लेस.
ठीक है, इज दैट ओके? ओके, चलो, लेट इट सिंक इनटू यू। थोड़ा सा पानी भरने दो अंदर। I'll go slow. Just absorb this. Just try to ponder over it कि हो क्या रहा है। बेसिकली ये वाटर फ्लैट जो है वो काम कर रहा है अपना। जो अगर मेरा डीबी टैंक है और खाली है तो उसमें पानी आता है तो डेकहेड तक आके उसके बाद रुक जाएगा, ऊपर तक नहीं जाएगा। तो मेरा वाटर पेन एरिया लॉस जो है वो कमती होगा, यानी कि 0 होगा। लेकिन अगर मेरा डेकहेड ना होता, पानी ऊपर तक जाता, राइट, तो यानी कि अगर मेरे विंग टैंक्स होते, सपोजिंग डबल बॉटम का साइड टैंक होता, तो ऊपर तक जाता और वो बाहर की लेवल को मैच करता, देन वाटर पेन एरिया लॉस्ट हो रहा है, देन लॉस्ट इज हैपनिंग। यस सर। ये मतलब है उसका। ठीक है, चलो लेट्स स्टॉप हियर। थोड़ा सा हेवी हो जाता है ये अदरवाइज, एंड आई विल सी यू पोस्ट लंच। ओके, बाय। थैंक यू सर। ओके सर, थैंक यू। थैंक यू सर। Thank you, sir.